Hello friends, I am CA Vedant Parikh and I welcome you all to my YouTube channel. Today, we are going to discuss about a major change bringing in a supernova news for the corporates by way of reduction in corporate tax rates. Yes friends, reduction in corporate tax rates which was introduced by way of an ordinance in September 2019 by our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji to address the economic slowdown. आंकड़ों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट is going to incur a loss of around 1,45,000 crore rupees by way of reduction in the corporate tax rates. So to discuss about this supernova change regarding the reduction in corporate tax rates, we have with us CA Dhwanil Shah. Dhwanil, what is the rationale behind bringing in this change? या तो यूं पूछ सकते हैं कि सरकार ने ये स्टेप क्यों लिया to reduce the tax rates? So Vedant, let me talk to you about FM Nirmala Sitharaman, who just recently introduced the budget, mini budget you may call it, and it was introduced by way of ordinance in September 19, and now it has been repealed and converted into a bill in 2019. Now let's talk about the economic slowdown we faced in FY 12-13. We are facing a similar economic slowdown in FY 18-19. The unemployment rate has been the highest ever recorded in last 45 years. Now coming to the industrial sector, which contributes majority to the GDP, now it is facing an economic slowdown as well. So the Make in India initiative by the government is also struggling since last couple of years. The Honorable Finance Minister is looking into reducing the personal tax rates as well. Now coming back to the Direct Tax Committee which has been formed by the government, it is looking into removal of DTT in the next year. Okay, so to sum up all this, we can say that government is making all the efforts, all possible efforts, so as to boost the economic performance of the country. Moving ahead to next question, हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है और क्यों किया है. अब जब हम बात करते हैं इंडिया की और हम इंडिया को जब कंपेयर करते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, तो व्हाट इज द सिनेरियो विद कंसीडरिंग दिस अमेंडमेंट कि इंडिया की ग्लोबल लेवल पे इसकी वजह से क्या पोजीशन होगी? So this will help India to become a competitive market and also become a favorable jurisdiction for FDI and FPI funding. Also, as you are aware, FDI and FPI will help to increase employment opportunities which the Make in India movement is currently facing. So we can say that this initiative will help India in increasing their rating of ease of doing business. So moving ahead to next question, that is जो प्रपोज किया गया है ऑर्डिनेंस जो बिल में कन्वर्ट हुआ जैसे आपने बताया, तो व्हाट इज दैट एग्जैक्ट चेंज दैट हैज बीन प्रपोज्ड इन दिस बिल? So if we go through the bill, there are major 5 changes which have been introduced by the government. Major change number 1 is basically concessional tax regime, wherein for a domestic company the reduced rate will be 22% and inclusive of surcharge and cess it will be 25.17%. Secondly, these domestic companies won't be eligible to get majority investment and expenditure related deductions. Also, these companies won't be able to get losses on these above deductions. Okay. So if the above conditions are not fulfilled by the company, it won't be able to opt for the CTR. Also, in case the company wants to opt for the CTR, it will have to wait till the due date of filing return. Also, the conditions in relation to above are not prescribed by the government, the same are awaited. ओके तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो कंपनी एग्जिस्टिंग 30% या 25% के स्लैब रेट में थी, उनके पास अब एक ऑप्शन है कि वो रिड्यूस रेट ऑफ 22% में जा सकते हैं, पर वो कब जाना उसके लिए दे हैव टू वेट बिकॉज दैट डेडलाइन हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट येट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे आपने बताया कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, गवर्नमेंट को एफडीआई ज्यादा लानी है, तो आर देयर एनी ऑप्शंस प्रोवाइडेड इन दिस प्रपोज्ड बिल दैट विल हेल्प द न्यू कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो उससे बेनिफिट हो इकोनॉमी को? ऑफ कोर्स, अभी कंसेशनल टैक्स रिजीम में वन मोर न्यू टैक्स रेट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज. बेसिकली द टैक्स रेट फॉर these entities will be 15%. So inclusive of surcharge and cess it will be around 17%. Okay, so 15% टैक्स रेट that becomes a very attractive rate to bring in new manufacturing companies into Indian economy. But there might be certain eligibility criteria or test which those companies would have to fulfill. तो वो criteria या test क्या है? Also, there will be a manufacturing production test required. So the company shall not be engaged in any other activity except the manufacture or production of an article or thing. Also, for example, computer software has been specifically excluded from these criteria. Also, as you are aware, as stated in 115BAA,
wherein you will be eligible, you won't be able to claim majority investment and expenditure related deductions. One more point which needs to be considered from transfer pricing perspective is the point that if a new manufacturing entity enters into a transaction with a connected person, the same will be brought to domestic transfer pricing, and the same will be taxed at 30% rate. Also, other income apart from manufacturing or production shall be taxed at a rate of 22%. Also, lastly, as you might be aware, STCG on non-depreciable assets will be taxed at 22%. Okay. So what I understand from this, heavy importance has been given to manufacturing word. As you rightly said, any other income or any other short-term capital gain will be taxed at a rate of 22%. So importance has been given to manufacturing, and that will be eligible for 15%. Moving ahead, जब भी हम टैक्स रेट की कैलकुलेशन की बात करते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस इज ऑलवेज गिवन टू मैट. तो जब हम 15% या 22% रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स एज फार एज द कंप्यूटेशन ऑफ मैट इज कंसर्न्ड? So this can be viewed in two ways. One way is you can utilize the MAT credit and then opt for CTR, or if there is no MAT credit with you, you can always have a reduced rate which has been introduced by the government. It has been reduced from 18.5 to 15%. Okay, so these all are the major changes which has been Correct. brought. Are there any left out or any important crucial areas which can also to be considered for the purpose of this amendment? So Vedant, as far as other amendments are concerned, there has been a rollback in the enhanced surcharge for FPIs and foreign investors, wherein the enhanced surcharge has been reduced to 15%. Now coming to the buyback tax, which has been levied recently on the listed companies, the buyback has been exempted if the announcement has been made before July 5, 2019 as per the SEBI regulations. So friends, to sum up this understanding of the amendments which has brought in for the reduction in the corporate tax rates, as far as companies are concerned, कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि वेदर हम ये ऑप्शन में ऑप्ट करें या ना करें, और अगर ऑप्ट करें तो कब करें. अगर हम कंपनी के स्ट्रक्चर को एलएलपी के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं तो देयर इज ऑल्सो रीवैल्यूएशन प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड. तो ये रीवैल्यूएशन प्रोसेस को हम एक एग्जांपल के द्वारा अंडरस्टैंड करेंगे. प्रपोज चेंज में अगर हम देखें तो वी कैन कंपेयर थ्री रेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल 15% as far as companies which are involved in manufacturing. Second, for existing companies जिनके लिए 22% प्रपोज किया गया है, और उसे हम रीवैल्यूएशन के लिए एलएलपी के साथ कंपेयर करेंगे जिसका टैक्स स्ट्रक्चर में फिलहाल कोई अमेंडमेंट नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 15% as far as new companies are concerned. For existing companies it is 22%, and as far LLPs are concerned it is as it is of 30%. उसका अगर इफेक्टिव टैक्स रेट हम देखते हैं तो इट बिकम्स 17.16% एज फार एज न्यू कंपनीज आर कंसर्न्ड. अगर एग्जिस्टिंग कंपनीज की मैं बात करूं तो उनका इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाता है 25.17%, और उसके कंपैरिजन में मैं एलएलपी जब पुट करता हूं तो इट इज 34.94%. तो यहां पे नीड है टू रीइवैल्यूएट दैट वेदर शुड वी ऑप्ट to go for new business where my ETR will be 17.16%, or to continue in the existing rate of 22% where the effective tax rate will be 25.17%, or to continue with LLP where my effective tax rate will be 34.94%. ये हमने बात की टैक्स रेट की जो न्यूली एप्लीकेबल होंगे और उन्हें इवेल्युएट करना पड़ेगा. जब मुझे इश्यूज को एड्रेस करना है तो मेजरली देयर आर टू इश्यूज व्हिच इज टू बी एड्रेस्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल इज विद रिगार्ड टू मैट क्रेडिट. इफ आई एम ऑप्टिंग फॉर दिस रिड्यूस्ड रेट then my MAT credit will lapse and I'll not be eligible to carry forward it. तो जो कंपनीज के पास MAT क्रेडिट का बैलेंस अवेलेबल है, they are advised कि उनका MAT क्रेडिट बैलेंस जब खत्म हो then only they switch over to this new option, because जब आपने ये न्यू ऑप्शन में स्विच किया तो सर्कुलर इज वेरी क्लियर कि वंस यू आर गोइंग फॉर दैट ऑप्शन आप रिवर्स बैक या वापिस दूसरे या पुराने रिजाइम में नहीं आ सकते. सेकेंड ये है कि जो मेरा डिडक्शन रिलेटेड लॉसेस है वो भी मैं एलिजिबल नहीं हूं कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. तो कौन से अमाउंट का एलिजिबिलिटी है जो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, या वहां पे दो तीन ऐसे पॉइंट्स है जहां पे क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी और वो सर्कुलर के द्वारा लाया गया. तो उसे हम एग्जांपल के द्वारा अंडरस्टैंड करेंगे. सपोज इफ वी टेक एन एग्जांपल कि फर्स्ट ईयर में
मेरी टोटल अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन फ्रॉम एडिशनल डिडक्शन वॉज ₹50. नॉर्मल डिडक्शन में था और 50, जिसकी वजह से मेरा अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन आया ₹100. अब बिजनेस लॉस भी करंट ईयर में था मेरा ₹50. टोटल इंटू टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस विच आई विल बी एलिजिबल इज ₹150. अब मैं ईयर 2 में मूव हो रहा हूं, जहां पे मेरी करंट ईयर की टोटल इनकम है ₹65. एज पर नॉर्मल सेट ऑफ एंड बिजनेस कैरी फॉरवर्ड लॉस, आई विल बी एलिजिबल टू सेट ऑफ बिजनेस लॉस ऑफ ₹50. तो आई एम लेफ्ट विथ रिमेनिंग ₹15. अब 15 एडजस्ट करूंगा मैं वो ₹100 के अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन के सामने, तो मेरा टोटल अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन अब बचेगा, लेफ्ट ओवर विल बी ₹85. अब ईयर 3 में आते हुए मुझे ये मालूम होता है कि आई एम लेफ्ट ओवर विद डेप्रीसिएशन ऑफ ₹85. अब मैं ये कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन रेट में जा रहा हूं, तो आई शुड कीप इन माइंड कि मेरा जो प्रीवियस अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन फ्रॉम डिडक्शंस वाले जो एडिशनल वाला जो था, आई एम नॉट एबल टू कैरी फॉरवर्ड इट. तो अब ऑप्शन 1 में मैं कंसीडर करूंगा कि मेरा ₹100 का इनकम है करंट ईयर में. अब प्रीवियस ईयर में मैंने जो ₹15 का डेप्रीसिएशन क्लेम किया, आई एम एज्यूमिंग कि वो ₹15 मैंने नॉर्मल डिडक्शन, नॉर्मल डेप्रीसिएशन में से लिया था, तो मेरा लेफ्ट ओवर कितना हो जाएगा, ओनली ₹35. तो माई टैक्सेबल इनकम विल बी ₹65. अब ऑप्शन 2 में मैं जाता हूं, जहां पे वो ₹15 यूटिलाइज किया था, आई एम प्रिज्यूमिंग कि वो अनएब्सॉर्ब एडिशनल डेप्रीसिएशन में से किया था, तो मेरा नॉर्मल डेप्रीसिएशन जो मुझे एलिजिबल है वो 50 है, जो ₹35 का डेप्रीसिएशन है लेफ्ट ओवर ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन ऑफ एडिशनल डिडक्शन वाला, दैट इज एनीवे आई एम नॉट एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड इन करंट ईयर. तो मेरी इनकम हो जाएगी ₹50. तो सर्कुलर सेज कि विच एवर इज बेनिफिशियल, टैक्स पेयर शुड ऑप्ट फॉर इट. तो इस केस में ऑप्शन 2 इज वायबल एंड वी कैन गो अहेड विथ ₹50 यूटिलाइजेशन. So as to conclude, we can consider it as a biggest reform of government since 1991 liberalization, whereby government has tried to boost up the economy by reducing the tax rates by a very drastic amount. उसकी इफेक्ट हमें दिखेगी मेक इन इंडिया को प्रमोट करने में और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में. Though there are certain issues which are unaddressed, for which notifications or clarifications from government is expected, and how far the government will be successful by bringing in this change to boost up the economy is a wait and watch show for all of us. Thank you so much.